to discuss. First, unrealistic assumption. It assumes there are no monopoly companies, which isn't true. क्योंकि क्रिटिक्स कह रहे हैं जी फ्री मार्केट की बात अगर की जा रही है, कंपटीशन की बात की जा रही है, तो स्मिथ की थ्योरी में हमें मोनोपोली की बात कहीं नज़र नहीं आ रही. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट द मोनोपोलीज, द organizations which have the full command of on the economy, which are the sole distributor and the producers. So it's important that you talk about the monopoly. Second बात आती है जी ignoring hidden cost. It wrongly claims that manufacturers cover all cost, overlooking the cost of pollution. Critics कहते हैं जी स्मिथ के अकॉर्डिंगली तमाम कॉस्ट जो है वो मैन्युफैक्चर पे करता है, बट वो बात नहीं करते उस कॉस्ट के बारे में जो नज़र नहीं आती. It is actually the cost of polluting the environment, damaging the environment, which can be harmful to the society. थर्ड बात करते हैं जी सेल्फ इंटरेस्ट ओनली. स्मिथ बात करते हैं जी लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट पर कंपटीशन बहुत अच्छा और फ्री मार्केट्स बहुत अच्छे तरीके से रन करते हैं, बट इट इज़ डिज़ायरेबल टू टॉक अबाउट द अदर एस्पेक्ट ऑल्सो. क्रिटिक्स कहते हैं जी पीपल ऑल्सो केयर अबाउट थिंग्स लाइक हेल्पिंग अदर्स एंड इम्प्रूविंग their communities, so they are also out of the self-interest too. Okay, fourth is need for regulation. The idea suggests that markets can run perfectly on their own, but some government rules and plannings can help improve fairness and protect the public interest. क्योंकि स्मिथ फ्री मार्केट की कंपटीशन की बात करते हैं और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, इसलिए क्रिटिक्स कहते हैं कि टू सम एक्सटेंट गवर्नमेंट रूल्स एंड प्लानिंग्स शुड बी देयर, क्योंकि वो हेल्प करते हैं जी फेयरनेस में एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट. ओके, द लास्ट एंड द थर्ड theory, which is free trade and utility theory, has been given by David Ricardo. So let's talk about the main assumptions of this theory. First, specialization. Advocated by Smith, who showed everyone prospers if nations specialize in making and exporting goods whose production costs for them are lower than for other nations. Simplest word, like Adam Smith actually promoted the idea of specialization. स्पेशलाइजेशन क्या है? एक कंट्री को वो प्रोडक्ट या वो सर्विस प्रोड्यूस करनी चाहिए या वो सर्विस देनी चाहिए जो रीज़नेबली और बेस्ट क्वालिटी पे प्रोड्यूस की जा रही हो. उसमें उस कंट्री का भी फ़ायदा है और उस कंट्री का भी फ़ायदा है जिसको वो ऑफ़र दी जा रही है. दैट मीन्स हमें यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट भी पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है. दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व. Second assumption is the principle of comparative advantage. Advocated by Ricardo, who showed everyone prospers if nations specialize in making and exporting goods whose opportunity cost to them are lower than the opportunity cost other nations incur to make the same goods. In simple words, students, what he is trying to say is जब आप स्पेशलाइजेशन के प्रिंसिपल पर फोकस करते हैं, जब आप स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो रीज़नेबल कॉस्ट पे प्रोड्यूस करते हैं, अल्टीमेटली आपको उसका कंपेरेटिव एडवांटेज मिलता है. दिस मीन्स दैट दे कैन ट्रेड एंड बेनिफिट इवन मोर. Countries can trade and benefit even more. They are having good product and services to offer, and the other countries have the best service to enjoy. Third assumption is support for globalization. The arguments of Smith and Ricardo provide support for globalization. How? Students वो free market की, free trade की बात करते हैं, utility की बात करते हैं. That means they are actually supporting the globalization, because free trade will allow nations to grow and prosper together by focusing on what they do best. Similar to the criticism on Locke's theory and Adam Smith's theory, there are several criticisms made on Ricardo's theory as well. Let's discuss. Capital movement ignores that companies can easily move money across border. That means like Ricardo बात करते हैं ट्रेड की, रिकार्डो बात करते हैं फ्री मार्केट की, but according to critics they say that he doesn't consider that companies can easily move their money to different countries. वो अपना पैसा एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जाया जा सकता है, which can change how trade works. ट्रेड की नेचर इसकी वजह से चेंज हो सकती है. Second is the constant cost. Assumes production cost don't change, which isn't realistic.
रिकार्डो बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की और रीजनेबल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, बट he actually ignored one main issue. What was that? That the cost can change due to various factors, for example, due to technology, due to resources, with the passage of time. So this is the main issue. Third is like the international influence overlooks the role of international organization and rules in trade. रिकार्डो जो है वो ट्रेड फ्री ट्रेड की बात करते हैं, बट ही एक्चुअली ignored the role of organizations and trade rules, which also play a big role in how countries trade with each other, because rules and regulations are there for the countries to follow. So it is important that you focus on the role of trade organizations as well. So, summing up the things, students, we discussed three main theories. Like, according to Locke, he emphasized like rights, natural rights, property rights, life. Smith advocates for transparency in free markets, and Ricardo encourages free trade. So we can conclude that together these theories they actually guide ethical decision making in business practices, which is really an important aspect in the overall economy of the country.